हेलो फ्रेंड्स, यूएसए में 4000 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है। देयर आर अराउंड 200 यूनिवर्सिटीज़ जो कि टॉप में कंसिडर होता है। प्लस स्टेट वाइज ही अगर देखें तो देयर आर अराउंड 50 स्टेट्स इन यूएसए और वहाँ हर स्टेट में एटलीस्ट 1 से 2 यूनिवर्सिटीज़ होते हैं। तो इफ़ वी सम इट अप तो अराउंड 50-60 टॉप यूनिवर्सिटीज़ तो आपको ऐसे ही मिल गए। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप एक बार में 50-60 यूनिवर्सिटीज़ में तो अप्लाई नहीं करोगे, कोई सेंस नहीं बनता। कोई सेंस है इस बात की? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको एक ही जगह पढ़ाई करना है, तो 50 जगह हाथ पैर मारने से अच्छा है कट इट इनटू 10 to 15 पार्ट्स। रियलिस्टिकली स्पीकिंग उसमें एडिशनल खर्चे भी बचेंगे और दैट वुड बी अ वाइज डिसीजन। और अगर फिर भी सारे 50 या 60 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है तो करो। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? कोई भी काम करने से पहले उस काम का प्लानिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, अदरवाइज काम के बीच में प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। सिमिलरली इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू स्टडी फॉर योर मास्टर्स इन यूएसए, उसमें पढ़ना चाहते हैं, फिर उसके लिए भी प्लानिंग बहुत ही क्रूशियल चीज़ होता है। शॉर्टलिस्टिंग अ यूनिवर्सिटी इज़ अ क्रिटिकल स्टेज इन योर जर्नी एंड यू कैनॉट एंड यू शुडंट टेक इट लाइटली। इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिससे आप अपना प्लानिंग सही कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट इनटू द बेस्ट कॉलेजेस इन यूएसए फॉर योर मास्टर्स। Although there are many agents or study abroad counselors out there who can help you with this process, there are some factors which you should consider yourself for shortlisting universities for studying masters in USA. Here's the list of things you need to do before you get started on your application. Number 1. First and foremost thing is to look for the university which is offering the course of your choice. Other factors can take a back seat, but your career depends on it. आप अपने करियर के ऊपर एक्सटेंसिव रिसर्च कर सकते हो ये जानने के लिए कि उस करियर में जॉब प्रॉस्पेक्ट्स क्या है आफ्टर योर कोर्स इज कंप्लीटेड। चूज योर चॉइस ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड चेक विद द प्रोग्राम इज ऑफर्ड। आपका फ्यूचर इस डिसीजन पे डिपेंड करता है, सो सिलेक्ट द कोर्स वेरी वाइजली। Number 2, check the ranking of the university. College and university rankings in the United States are the rankings of the US colleges and universities based on factors that vary depending on ranking. Check the ranking of the program and the university. Number 3, tuition fee and living expenses. This process involves you counting the total amount of investment in currency which you will be needing in total for the entire tenure of your masters. This includes the cost of studying, cost of living, cost of traveling, medical bills, and every other expense that you make in your journey in USA. Check कीजिएगा कि इस ट्यूशन फीस और वहाँ पर रहने के लिए जो पैसा खर्चा होगा वो आपका बजट के अंदर होगा या नहीं। Also check if the university is providing any kind of financial aid for students like you, whether you're a national or international student, such as scholarships, and also check about the associated deadlines. Number 4, check the acceptance rate of the colleges. Categorize universities based on acceptance rate, which can be divided into 3 broad aspects, which is dream colleges or ambitious colleges, moderate colleges, and safe colleges. Dream colleges are ones which are like grapes, which you do not know whether they are sweet or sour, but you want to attempt them as they are your dream universities. Safe colleges usually have a 60 to 75% chance of admission rate for your profile. So if you are applying to these, then most probably you will be getting selected and getting admission in these universities. Moderate are the mid-range partner between these two. Moderate is the one where you have got mixed reviews. Checking acceptance rate is also important, especially for international students. Number 5, on-campus placement opportunities. Check if your college is providing campus placements or other opportunities such as internships and workshops in your field of study.
Check internship and job opportunities available in your college after the completion of your course. Also check if your college is providing on-campus job opportunities during your study or if you can get off-campus jobs there. This brings to our next point, location. Location of the university or college can help you understand whether you can adjust to the weather of that place or not. Check out the location of these colleges as getting off-campus jobs will depend on these locations. The location is an important aspect as it also indirectly is related to the total cost of staying there, the weather, the travel fares, etc. University location and weather is most important because if you are weak and have certain health problems, then the weather might be affecting you, so you need to keep it in check before booking your tickets there. Number 7. Research and prioritize. Research about each and every university you have selected. Go to their websites, find out all the mentioned points above regarding these colleges and note them down on paper. This will give you a better clarity and help you prioritize universities and get the top 3 from your list. Number 8. Do personal research. Contact people in these careers, whether they are your friends, family, relatives, seniors, or strangers. Find these people and contact them to gain a better perspective of real life experience of these contacts. You might even find certain tips and loopholes which might be advantageous to you which you won't be getting via the internet. Ask your seniors who have been there in the previous fall and tell them about your interested course to get some feedback. यहाँ पर हमारा लिस्ट खत्म हो जाता है. एक बोनस टिप आपके लिए, आप खुद से पूछिएगा कि कौन से करियर्स अभी ग्रो कर रहे हैं, कौन से इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हैं, क्या आप ग्रेजुएशन के बाद ही काम करना चाहते हैं या फिर और पढ़ाई करना चाहते हैं, आप कहाँ पर काम करना चाहते हैं आफ्टर यू ग्रेजुएट. These questions will help you understand and make a better list of colleges. So, what are you waiting for? Start applying. All the best. If this helped you, please like, share and subscribe so that you won't miss out on the latest video and updates from this channel. Thanks for watching.